weekend, and it's a blessing to see your family members, friends, and dear ones from all over the world. And it's really good. I would like to welcome Ajib, who has just joined, and Premodi, welcome. And the whole family would like to welcome you, Roshanda, and yeah, Joel is there. Um, Pablu, Norma Didi, and Melvinda, Nicole, Nathan would like to welcome you, Bagrai, Mummy, Daddy, and would like to welcome all of you. माँ आप उसको म्यूट कर दीजिए. साइड में एक तो बटन है, वो लाल लाल सा होगा, उसको ऐसे दबा दीजिए, तब उधर का आवाज नहीं आएगा. कोना में नीचे. हाँ, ठीक हो गया. और जब बात करने के टाइम उसको फिर दबा देने से वो खुल जाएगा. तो मैं आप सबों को फिर से स्वागत करना चाहती हूँ आज के इस सभा में. ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद. पूरे सप्ताह भर ही उन्होंने हमारे जीवन में बड़ी बड़ी आश्चर्य कामों को किया है और हमें ये मौका दिया कि आके एक दूसरे के साथ मिल सके. जैसा दादा कह रहे थे, जेमी का बुखार रहा है और फिर भी वो अभी ठीक है. उनके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और करेंगे. आज भी बबलू के लिए हम प्रार्थना करेंगे क्योंकि उनका भी तबीयत काफ़ी ख़राब था, लेकिन हम खुश हैं कि वो आज हमारे बीच हो सकता है और ईश्वर ने अद्भुत तरीके से उसके जीवन में काम किया. यहाँ पर घाटशिला से डैडी का कीमो बहुत सही तरीके से चला और अभी तक उनको वो तड़प और जलन महसूस नहीं हुआ है. इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं. हम बाइबल में से पढ़ना चाहेंगे और ये हम लोग इस पद से हमारे लिए बहुतों के लिए कंठपद रहा है. भजन संहिता का 23 अध्याय जितना बार भी हम पढ़ते हैं हम लोग को बहुत अच्छा लगता है. तो मैं हिंदी में ही पढ़ना चाहूंगी. मैं विश्वास करती हूँ कि हम सब हिंदी समझते हैं. हल्का इंग्लिश में बोलना चाहूंगी. वी गोइंग टू रीड फ्रॉम साम चैप्टर 23 बिफोर वी स्टार्ट. इसका शीर्षक है जिससे शुरू होता है, ये कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है. यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी. वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है. वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है. वो मेरे जी में जी ले आता है. धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है. चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है. तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है. तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है. तूने मेरे सर पर तेल मला है. मेरा कटोरा उमड़ रहा है. निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा. इस वचन पर परमेश्वर आशीष दे. और इस वक्त मैं प्रार्थना करना चाहूंगी. हम लोग सब अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे. हे हमारे स्वर्गीय पिता, फिर से तुझे धन्यवाद देते हैं. एक सप्ताह के अंत में तू हमें लेकर के आया. सारा सप्ताह भर हमारे जितने भी पड़ाव है, नीचे से लेकर के ऊपर तक, हम जिंदगी में जब सफर करते हैं, तू हमारे साथ रहा है, हमें मदद किया है, हमें सुरक्षित रखा है, हमें नया दिन देखने का मौका दिया हर एक दिन. और इस समय एक सबत से दूसरे सबत में जब हम आते हैं, हम जानते हैं तो हमारे लिए ढेर भरपूर आशीष लेकर के रखा है. और जब हम सबत के इस घड़ी को पवित्र ठहराते हैं, पवित्र मानते हैं, हम जानते हैं पिता तू हमारे ऊपर आशीष उंडेलेगा. और इस वक्त जब हम आगे बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम में, मदद कर, आशीष दे के हमारे कोई आशीषित हो, हमारे कोई एक दूसरे से जुड़ जाए तेरे प्यार के द्वारा, एक दूसरे के लिए हम रहे. ऐसा
उसके साथ भी हो, जेमी के लिए भी, और बाकी हम लोग जितने कोई हैं यहाँ डैडी, सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं। इस वक्त जब हम शुरू करने जा रहे हैं पिता, तू मदद कर, तेरी उपस्थिति हमारे बीच हो, और हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमें हर दिन तेरे करीब लेके आ, ताकि हम अंत के दिनों में जब वास करते तेरे आगमन के लिए तैयार हो सके। फिर से पिता, इस विनती को यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, तू दया कर के सुन और ग्रहण कर। आमीन। अभी हमारा वक्त है गीतों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने के लिए, और हम ये वक्त, ये समय अर्पिता, डॉक्टर अर्पिता और चेरी को ये वक्त देते हैं ताकि वो हमें गाना में अगुवाई करे। दिस इज टाइम फॉर सॉन्ग सर्विस एंड आई एम सो हैप्पी अर्पिता एंड चेरी आर देयर. They're going to lead the song service for her. So let us join in together and unite our voices and sing as they lead us. Over to you, Cherry and Arpita. Thank you. Thank you, Fufu. Happy Sabbath, everyone, and welcome to our song service session. I'll be sharing a slide, so hopefully all of you can see and sing it. Ab mic to on karke, I'm not sure if that's possible, but hopefully these songs will make you feel like it's the Sabbath day. And these are the songs that we're singing today are all old songs. There are only 3 of them. But hopefully all of you could enjoy this and sing along. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. John 10 verse 11. I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me, just as the Father knows me, and I know the Father. And I lay down my life for the sheep. John 10 verse 14 and 15. With these words, we'd like to sing our first song. I hope this is a familiar one. It's called Shepherd of My Soul. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen to your voice. Wherever you may lead, I will go. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen to your voice. Wherever you may lead, I will go. Be it in the quiet pasture or by a gentle stream, the shepherd of my soul will be my guide. Should I face the mighty mountain or valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made the choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. Be it in the quiet pasture or by a gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face the mighty mountain or valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Shepherd of my soul,
I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made the choice to listen to your voice. May lead, I will go. Wherever you, I will go. For our next, we'll start with the verse. And my God will supply all your needs according to his riches in glory in Christ Jesus, Philippians 4, verse 19. And as this verse implies, we should rely on God because he will give what we need, and he will satisfy all our wishes. So with this verse, we'll go on to our next song, You Are My All in All. I hope this is familiar. So if you're singing along, please join in. Just 1 minute, Arpita. Rani, can you, Rani, तो म्यूट कर दो ना. आवाज आ रहा है बहुत जोर से. रानी रश्मि, साइड में एक म्यूट. हाँ, थैंक यू. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, not to give up, I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, I cross my shame. Rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Yeah. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and dust destroy, and where thieves break in and steal, but lay up yourselves treasures in heaven,
where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Matthew 6, verse 19 to 21. This song that we'll be singing, which is our opening song, is actually one of our golden favorites. It's sung by Jim Reeves. I think sabko, and most of you will know this song. It's called "This World Is Not My Home." This world is not my home. I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel it. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel like home in this world anymore. The Bluetooth device is ready to pair. तो ही करने वाले हैं ब्लूटूथ Connected. Not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel like home in this world anymore. Just up in glory land, we live eternally. The saints on every hand are shouting victory. The songs of sweetest praise drips back from heaven's shore, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Feel at home in this world anymore. Thank you for joining along. I'll give this time back to Fufu. Thank you, Arpita and Cherry, for the beautiful song service. You reminded us of the old songs that we've almost forgotten, and it was really nice singing along, remembering those songs. At this time, we will have our opening prayer by Mr. Pradeep Tete. And before moving on to Mr. Pradeep Tete, I would like to welcome all of you who joined us now. I had already welcomed, but all those who joined after we started the song service, please feel welcome. We are very happy to have you in our Vespers meeting, and we are hoping that you would join us every week. So let us do our opening prayer. इस वक्त हमारा प्रार्थना होगा और मैं प्रदीप टेटे जो गालूडी में है उनसे अनुग्रह करती हूँ कि वो हमारे लिए प्रार्थना करें और सभा में हम आगे बढ़ें. प्रदीप.
और एक रिक्वेस्ट है मेरा सबसे, हम ध्यान दें कि हमारा जो डिवाइस है वो म्यूट रहे ताकि सबको अच्छी तरीके से हम एक दूसरे को सुन पाएंगे। और हम लोग बहुत खुश है कि हम फूफा को देख पा रहे हैं। फूफा, आपको स्वागत करते हैं, बहुत अच्छा लगा आपको देख करके, और हम लोग आपके लिए रोज प्रार्थना कर रहे हैं। वेस्पर्स यहाँ तो कर ही रहे हैं, प्लस हमारा हर दिन का जो प्रार्थना है उसमें हम लोग आपको याद कर रहे हैं। आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, ये हमारा दुआ है और ये विश्वास है। आपको हम स्वागत करते हैं। थैंक यू। मूविंग ऑन टू प्रदीप। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। हाँ, करिए प्रार्थना। ठीक है। इस स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करने वाला प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस पवित्र दिन में तू हमें 6 दिन तू हमें दूर रखा और पवित्र दिन में फिर से लेकर आया। हर एक पल, हर एक घड़ी हम जी सके तेरे नाम और तेरी महिमा और तेरी स्तुति, अपने आंखों के तले तू हमें रखा। और इस समय जब हम पूरे संसार में यहाँ वहाँ फैले हुए पूरे परिवार, इस हेमरों परिवार जेडी ग्रुप में हम जुड़ते हैं जूम के द्वारा, और हम सब एक साथ मिल करके प्रभु तेरी महिमा और तेरी स्तुति कर सकते हैं। जितने भी हमारे परिवार में बहुत सारे बुजुर्ग हैं, नाम नहीं ले रहे हैं प्रभु, खास करके फूफा को तेरे हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं मिस्टर हेमब्रॉम बाबा के लिए, और साथ ही हमारे फलाकटा या फिर हमारे पूना में, और जितने भी हमारे बुजुर्ग और जितने खूंटी में हैं, और साथ ही साथ हम याद करते हैं डॉली दीदी, इस तरह से और भी अन्य अन्य जगह में हैं, और तेरी आराधना और तेरी स्तुति में हम साथ मिल करके एक साथ यहाँ एकत्रित हो सकते हैं। पिता, क्या हम धन्यवाद देते हैं ये पल के लिए, और गीतों को गा सकते हैं और तेरी स्तुति और वचन को पढ़ेंगे, उन पर तेरी आशीष होने पाए। जो कुछ भी करेंगे तेरी महिमा और तेरी स्तुति होने पाए। पिता, जो नहीं जानते हैं, अंतिम समय में हम जीवन व्यतीत करते हैं, हम उन लोगों को तक आज का जो मैसेज हम सुनते हैं अपने जीवन में, हम उन चीजों को भक्ति मनुष्य चाल चलन व्यवहार से हम पाप और गुनाह करते हैं, हमारे संग तो हो। हर एक प्राणी जितने आज तेरे वचन को सुनेंगे, हमारे मन हृदय में रखने में तुम मदद कर, और क्या मांगे मांगने से पहले सब कुछ जानता है। पिता, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, जैसे सुन और ग्रहण कर, आमीन। बहुत धन्यवाद प्रदीप भाई प्रार्थना के लिए। इस वक्त हम उस घड़ी में आ पहुंचे जिसके लिए हम लोग सब बहुत इंतजार करते हैं। इसके लिए हम लोग तैयारी करते हैं, अपने बाइबल्स को पढ़ते हैं, और आज जांचने का समय है कि हमको कितना याद है जो हम पढ़े। बहुत अच्छी बात है बाइबल में से पढ़ना, सीखना और याद रखना। जब हम याद रखते हैं तो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए हम अपने क्विज मास्टर जो है आज के ग्लैडविन टुडू गिलू दादा, ये समय हम उनको देते हैं, और हम आशा करते हैं कि हम लोग सब कोई पढ़े होंगे अपने बाइबल्स में से जिसका पोर्शन था एक्सोडस 2, 3 और 4, एक्सोडस निर्गमन 2, 3 और 4। तो चलिए हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हो। इस समय हम गिलू दादा मिस्टर ग्लैडविन टुडू से अर्जी करते हैं कि वो आगे का भार संभाले। Okay, thank you, Janelle. And I'm still getting used to this. I think I've got the permission to share screen. Okay, can you see my screen? Can you see the screen? Yes, Dada. Yes, Dada. Yes, we can see the screen. Okay. Okay, that's the
Game pin. Let's see. Okay, so far we have 14 participants. We'll just give another minute maybe. Okay, last 20 seconds. Okay, I think we're ready to begin. We have 18 participants. Okay, if you're ready, we're going to start now. Okay, here's the first question. The priest of Midian had dash daughters. Okay, the correct answer is 7. We find in Exodus 2:16, it says, now the priest of Midian had 7 daughters, and they came and drew water and filled with the troughs of water in their father's flock. So we have 13 participants who got correct. Okay, next question. Okay, we have Bagra leading with followed by MJ and Kenny. The ark used to hide Moses was made up of. Okay, the correct answer is bulrushes, found in Exodus 2:3, and it reads, and when she could not longer hide him, she took him an ark of bulrushes. Okay. We still have, we have a new leader, Kenny, followed by MJ and Teddy. Next question. At the burning bush, God said to Moses that he was the. Okay, the correct answer is God of his father, God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob. And it's found in Exodus 3:6. Moreover, he said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Okay, we have a new leader. Delano is leading, followed by Kenny and MJ. Next question. Who circumcised Moses' son?
Okay, the correct answer is Zipporah. We find it in Exodus 4:25 and 26. Then Zipporah took a sharp stone and cut off the foreskin of her son and cast it at his feet. Next question. Okay, we'll see. Okay, Delano still leading. Next question. After fleeing from Egypt, Moses came to the land of the Midian and sat by. He sat by a well, and 12 participants got correct, and it's found in Exodus 2:15. Okay, we will go to the next. Before we see that, we'll see the scoreboard. Delano still leading, followed by MJ and Stells. Next question. Pharaoh's daughter named him Moses because. Okay, she drew him out of the water. It's found in Exodus 2:10. Okay, we will not read the text. Okay, we have Delano leading still. Seventh question. How many signs did God ask Moses to show to the king of Egypt? Okay, 2 signs. And 7 participants have got correct. We find that in Exodus 4:9. Next. Okay, we have MJ leading, followed by Kenny and Delano. Moses was keeping the flock of his father-in-law near the mountain. Okay, Horeb is the right answer. We find it in Exodus 3:1. MJ still leading. Ninth question. When Moses killed an Egyptian, he hid him in the. He hid him in the sand. We find that in Exodus 2:12. MJ is still leading. If the Egyptians did not believe the 2 signs nor listen to Moses' voice, God told him to. Okay, the correct answer is take water from the river and pour it on dry land. We find that in Exodus 4:9. Next, we still have MJ leading. 11th question. The daughters of the priest of Midian told him that delivered them out of the hand of the shepherds. Okay, answer is an Egyptian. We find that in Exodus 2:19. We have MJ leading still, followed by, there's a tight second place, Kenny and Delano, and Stells is in following them. Next question. Question 12. Who appeared to Moses in a flame of fire?
Okay, the correct answer is an angel of the Lord. We find that in Exodus 3, verse 2. Okay, we have MJ leading, Delano is second, Stells is third. Next question. Moses took his wife and sons and sat them on dash when returning to Egypt. The correct answer is an ass, found in Exodus 4 at verse 20. 9 of you got correct. Okay, MJ is still leading, followed by Delano and Kenny. 14th question. The Lord said to Aaron to meet Moses in the correct answer is the wilderness, and we find that in Exodus 4:27. Okay, the last question coming up, we still have MJ leading, followed by Delano and Kenny. God will bring the Israelites out of Egypt unto the land of dash. Okay, the correct answer is Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. Only 4 of you got correct. And let's see what the final score looks like. The third position, Stells. Second, Delano. And the winner today, MJ. Congratulations, MJ, Delano, and Stells. Gilu Dada, thank you so much Okay. for that very challenging. Okay. Yeah, once again, congratulations to all those who did well. Everybody was doing pretty well. You could see that the difference between the score was not much. MJ, Mervin, congratulations. And Delano is Melvin Jiaji and Norma Didi in the second position. Stella from Ranchi in the third position. And in the fourth position, I don't remember, fourth position. Oh, we had Kenny. And in the fifth position, GRR is George Ranjit. So congratulations to all of you. George Ranjit. George. GRR. Okay. Okay, now it's time for us to praise God through singing, and we have a special song prepared to us from Galudi. We have 2 little angels there, Samiksha and Pratiksha, who are going to present to us the song. And I was so happy this time that I didn't have to make any effort, much of an effort to approach, because they were volunteers who were willing to use their talents for the Lord. And may God bless all of you as you come forward and you use your talents for Him. इस वक्त हम प्रदीप टेटे, प्रदीप आपके पास हम आपको माइक देते हैं. हम समीक्षा और प्रतीक्षा से अर्जी करते हैं कि वो हमारे लिए गाना प्रस्तुत कर सकें. सैमी एंड पैमी. Happy Sabbath, Didi. Happy Sabbath, Didi. Happy Sabbath, Samiksha and Pratiksha, Sammy, Pammy.
यीशु तू है मेरा मार्ग सत्य जीवन, तू है प्रभु देता मुझे आत्मा का बल। यीशु तू है मेरा मार्ग सत्य जीवन, तू है प्रभु देता मुझे आत्मा का बल। इसलिए जीवन है और आगे है और प्रेम है, इसलिए जीवन है और आगे है, इसलिए सत्य है और प्रेम है। तूने जो मुझसे प्रेम किया, प्रेम के बदले जीवन दिया, सामर्थ दिया, भरोसा दिया और दी जिंदगी। तूने जो मुझसे प्रेम किया, प्रेम के बदले जीवन दिया, सामर्थ दिया, भरोसा दिया और दी जिंदगी। यीशु तू है मेरा मार्ग, प्रभु आत्मा का बल। यीशु तू है मेरा मार्ग सत्य जीवन, तू है प्रभु देता मुझे आत्मा का बल। जीवन है और आगे है, इसलिए सत्य है और प्रेम है, इसलिए जीवन है और आगे है, इसलिए सत्य है और प्रेम है, इसलिए जीवन है और आगे है, इसलिए सत्य है और प्रेम है, इसलिए जीवन है और आगे है, इसलिए सत्य है और प्रेम है। तूने जो मुझसे प्रेम किया, प्रेम के बदले जीवन दिया, आनंद दिया, बलिदान दिया, इतना बड़ाई किया। तूने जो मुझसे प्रेम किया, प्रेम के बदले जीवन दिया, सामर्थ दिया, बलिदान दिया और दी जिंदगी। यीशु तू है मेरा मार्ग सत्य जीवन, तू है प्रभु देता मुझे आत्मा का बल। यीशु तू है मेरा मार्ग सत्य जीवन, तू है प्रभु देता मुझे आत्मा का बल। तू है प्रभु देता मुझे आत्मा का बल। और आगे है, इसकी है और
है और भाग्य है, इसी सत्य है और प्रेम है। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले मैं प्रदीप और सुषमा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से बच्चों के साथ समय और सैमी और पैमी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बहुत खूबसूरत तरीके से दोनों गाए। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। इसी तरह आप अपना जो टैलेंट है उसको उनके लिए इस्तेमाल करते रहे। हमारे पास और एक खास गीत है। थैंक यू। थैंक यू, यू आर वेलकम। इस वक्त हमारे बीच और एक खास गीत है, एक छोटी एंजल जो पूना में रहती है। At this time, I would like to give this time to our little angel Claudia. She has presented a very beautiful song for us, and I would like to give this time over to you, Preeti Naomi. It's your time, Claudia. I would love to listen to your voice. Preeti Mummy will sing with me. Happy Sabbath to everyone. Happy Sabbath, everyone. Wish you all a very happy, good weekend. One start. I'm only human. I'm just a woman. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. And that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do it every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you walked among men? Well, Jesus, you know, if you're looking below, it's worse now and then. Pushing and showing, crowding my mind, Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Thank you all. Thank you, Kuku, for that lovely song, and Preeti for accompanying. That was a very beautiful song. Took us way back long into our childhood, and that was very beautiful voice. Thank you so much.
Kuku and Preeti and everyone. Now it's time for our message, and I'm happy to introduce to you Mr. Ashok Sagure. I grew up calling him Ashok Uncle, and beautiful memories I have of him. We spent the 3.5 years that we spent in Jodhpur. I don't remember going anywhere out or visiting people's house without him. He would always be there with us when we went for visiting, for praying and singing to people's houses. And he loves little children, that I know, because he always took care of us. And he is a very talented, very responsible person, and God has blessed him. While we were still there in Jodhpur, he married to, we call her Junita Bhabhi, Junita Bhabhi and Ashok Uncle. I know it sounds funny, but that's how we grew up calling. And he has a lovely family and a daughter. Ashok Uncle is running a school in Jhalap, and it's in Uttarakhand. Chhattisgarh, sorry, in Chhattisgarh. He's running a school there, and God has blessed them. And we are so happy that he accepted when he was given this opportunity to speak. I'm so glad and thankful. We couldn't get back to Uncle. We were so busy throughout the week. I'm so sorry, Uncle. We couldn't get back to you, but we are so happy and privileged to hear from you the word of God. The time would like to give you, Uncle. Now you can share the message with us. Thank you. Thank you so much. Yeah. Yes, Uncle. Happy Sabbath to you all. Can you hear me? Yes, we can hear you. Yes, uncle. Yes, uncle. We can hear you very clearly, First but of we'd all- also like to see you. Uncle, we cannot see you. But my video is on. Okay. Can you see now? Maybe. Can you press it again? Rest everybody can see Ashok Uncle, or only we are having the problem? No, we still. Because I can see you. Yes. No, his video is blank. My video is on from my side. Yeah, but Is it visible? No, not yet, we sir. cannot see you, but I think the video is on from your side. Yeah, my side is on. Oh, still we can continue. Anyway, Yes, Uncle, we can continue. So Okay. first of all, I would like to thank God for giving me this opportunity. And secondly, to the GPD family, the extended family, we are part of it. We are so thankful that we could, every Vesper, we could participate. And this time, God has chosen maybe and given the opportunity that I could share the word of God with you. In fact, my today's topic, though I am not a pastor or a good preacher, but it be always ready to share the word of God. The topic for today is, how can I discover God's will for my life? This question comes many times. Whenever we do certain things, or many things, it's because guidance. What am I doing? Does God really like it? Will God be happy? Or am I taking the right decision? What am I? Is it right? Right? This kind of thing comes to our mind. Often think we seek advice, we ask people, we make decisions, but our decision may not be 100% correct. We always seek advice from our elders, friends, or elderly people. This always happens with me. But have you ever thought of how could it be if Jesus have lunch with me today? Or maybe the next Friday he invites, or maybe you get a message from heaven, or maybe the angels knock at the door and tell you, Jesus is going to come and meet you. What kind of situation would it be? How will you feel that thing? I hope that first thing we will do is
bow down at Jesus' feet and thank him and ask him, Jesus, what do you want me to do for you? What is your will? How can I do your will? Certain things, this kind of question always come to your mind. And Jesus cares for us. He loves us. And here's the way. All of us have that moment when we want to hear God's voice or what he wants us to receive the direction that we want to regarding the right decision. This is always come. Maybe a business decision, maybe a relationship decision, maybe a career or a choice of major expenditure. Whenever we want to come such situation, we always seek somebody's advice. Somebody should make a decision for us. We on our own find it incomplete, or maybe we don't have that confidence to take the right decision. Is it from God? Okay. Our decisions really matter. We make our decision, and our decisions make around us and makes us. We'll have so many questions. It could be like, which college should I go to? The youngsters, maybe finishing their junior college, they would join the college. They will decide which college would I like to go. Or if you have starting a job, maybe you got a offer from 3 different places. Which one would be best for me? Where wants me to go and do? Or maybe you have 2 children, you want to have the 3rd child, and you want to ask, what should I do? Should I have the 3rd child or adopt the 3rd child? This kind of question may come. Okay, and then is God calling me to go to such and such a place where I'm getting the call from? So it is hard sometimes to take the decision. We want to know which is the right. So once you have such kind of situation and we come to the conclusion, yes, now we have done our part. Now that comes the situation of nail biting. Nail biting means we think of, what am I doing? Is it right? Is it correct? Or is the way that I'm supposed to go? Does God want? Friends, there is, or you want to find, is there any other way to get 100% certainty about God's will? That you choose the direction that you are going to. Am I audible? Am I audible? Hello? Yes, uncle. Yes, uncle. You're audible. Yes. Okay, I'm continuing. Okay. Okay. Thank you so much. Most of the times we feel like this. When we take options, it's better study. We research, study, nurture friends, pray about it, and wait for the Lord's turn. That do everything the right decision. Now, taking the right decision, it is God's problem, not ours. We may think, because we trust him, and God wants you to know more about his will than we want to know about what he wants us to become. So it is always, whenever we should do our part first, what we want to do, first we decide, make decisions, and then put it to God. Knowing God, it has sometimes many problems. Or knowing God's will, that what I am doing is correct, the questions might come. He can put you exactly where you want you to be. That is in God's hands. He can arrange all the details years in advance with what you want to do. Or he can open doors that seems tight closed. That is God's will. He can open for us. He can remove any obstacles that stands in our way. Or he can take your choice and put them into his plan and then make it complete. He can even take your mistakes and bring good about all this. Or he can take tragedy and use it to your good and his glory. So this all depends. Friends, all he needs is, in fact, the only thing he requires is a willing heart. If we have a willing heart, we believe
We trust Him that God is always with us, whatever the situation we have. But we should do our part first and continue to do. Now, there are 4 verses. If anyone could open up and help me to read. It is in Proverbs 16:9. Proverbs 16:9. Hello? Yes, Uncle. 16:9. Yeah, Proverbs 16:9. A man's heart plans his way, but the Lord directs his step. Oh, thank you so much. Thank you so much. Proverbs 16:9, it says, in his heart a man plans his course, but the God determines his steps. We can plan things. It is God who determines where. This is how it helps us to believe in God. God is always there. He has promised. He has already given. Proverbs is clearly written, in his heart when makes a plan, his course, but God determines it. What a wonderful promise God has given to us. We can have one more text that is in the Proverbs only, 16:33. Proverbs 16:33. Yes, Proverbs 16:33. The lot is cast into the lap, but every decision is from the Lord. Yes. This is another beautiful verse. It says, the lot is casted in the lap, but its every decision is from the Lord. See, whatever we plan, whatever we think, wherever we go, whether it's a career, it's expenditure, or marriage, or college, or you want to build a new house, it's always God who decides, who directs us, and who guides us. Here the word is, the lot is cast into the lap. This word is from the Old Testament. The word cast is, in the olden days how it was. If you want to know the will of God, they have certain ways to find out the wills. You might have done in your maybe childhood or youngerhood or whatever it is. Sometimes we want to find out the will of God by different ways. If God wants me, this will happen. In those days, casting was casting out. They will cast some colored stones to put together and then find out if it is the will of God, this stone will come out. Actually, it's a belief. Everything it depends on God. God exactly knows which stone should fall out and what should you do, because God has already decided for each and every soul. That's on the face of the. He has the power. He has the command. But we have to reach up to that place. It's our duty, our part, to come closer to God, surrender ourselves, and be humble, be faithful, trust Him, go through the scripture, and of course we should follow all the commandments. We can have one more text. It is also from Proverbs 19:21. Proverbs 19:21. There are many devices in a man's heart. Nevertheless, the counsel of Proverbs 19:21. There are many devices in a man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. Yes. Maybe it's a different version. Many are the plans in the. This is a different version. I will just repeat it. Many are the plans in the man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. It means the same thing. Okay. Now, here the purpose of the Lord is that He always plans for His children. He has already planned a life before the creation of the world. He has all plans. God is God, and we are not. So He plans things and makes things happen. We can have one more verse. It is also from Proverbs 20:24. Proverbs 20:24.
a man's steps are of the Lord, how then can a man understand his own way? Thank you so much. A man's steps are directed by the Lord. How can anyone understand his ways? It is very, very difficult, rather, to understand God's way. We can only believe, we can only trust, we can have faith, because we have seen throughout the Bible, from Genesis to Revelation, there are many, many believers of God, followers of God, the trusted people. Through their lives, we can understand how God is there to help us and bring us to know His will and to God. We can have the first rule of spiritual life. He is God and we are not. The very thing is, we cannot handle situations and things like this when it comes to us. We are maybe tired, or we get scared to know what is the will of God, how we are going to come out of this situation. It says the first rule of spiritual life is, He is God and we are not. So we find ourselves short to do anything. So there are certain principles. There are 4 principles which I'm going to share with you, that which help us to come closer to God and know His will. First is, use all your intelligence to make wise decisions. When it comes to make a decision or take a decision, what you should do is use your intelligence. God is there, but it's our part that we should do our part. God has given us minds, the power of choice. That doesn't mean that we should do anything, but in accordance with the law of the Lord. Fear the Lord and make your plan, make your decision, and God is going to help us. Then we have the second point. See, you can't know the future. You rarely have 100% certainty about the most decisions. When we take decisions, we are not sure whether it will be right decision or not. But there are certainty. Look, when we turn to the God's people, Noah. Did Noah know about the flood? No, but he built the ark because he his part. The place where he was going to, he left Ur. He has known about it. He had no, but he went there. Then, what about Moses? What does that mean to lead God's people? They had the idea that would be like to lead the people, God's chosen. Because think about Joshua. Had he got any idea how the city wall is going to, Jericho city wall is going to fall? But he did it because he believed it. And he made his decision and he did it what God wanted to do. Think about young David. When Samuel went there to Jesse's house and said, "This is the one, chosen one." He did not know much, but it is God who chooses His people, His children to do what. Then the third point is, God wants a guidable people who will trust Him with the details life. Then we have chosen ourselves to serve the God and listen to His, seek His advice or know His will. The people who are guided by God, it's already in our heart. God prevails. God is in everybody's heart. Because God has created every soul and He loves each and every one to the right direction. And the fourth is, when the time is done, you can leave the result. To take the decision, do your best, whatever you can do. Seek God's advice, seeking friends, whatever it is. First part is that we do our part and then leave everything to God. God will definitely going to help us. He's going to take us to He always knows the heart of man, and He guides His people. Which way should we go? Maybe we will try the best thing we do, but what God wants, He will take us that way, and He will bring us to the point that we could really do God's will. With this,
I conclude and I thank you once again to the GPT family and thank God for giving me the opportunity. May God bless each one of us. Thank you so much. Thank you, Ashok uncle, for the very beautiful, timely message. And this was a message that we really needed. How do we know God's will? And I'm so thankful to you that you chose this topic and we could learn more. At this time, we have our closing song. And this closing song is a special song by Bablu Kulwinder Matthews. इस वक्त हम सभा को अंत करेंगे. हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं. अशोक अंकल बहुत सुंदर खूबसूरत वचन हमें सुनाए और अभी वक्त है कि हम इस सभा को एक खास गीत से अंत करें जिसे परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो. और मैं इस वक्त ये समय बबलू जिसका अच्छा नाम कुलविंदर है उसे सौंपती हूँ ताकि वो हमें अपने मधुर आवाज़ से गाना सुनाए और सभा को अंत करे. थैंक यू बबलू. खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम रंग से लिखूं तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूं खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू. दिल तो डूबे फिर से डूबे तेरी मोहब्बत में, दिल तो डूबे फिर से डूबे तेरी मोहब्बत में. तेरा चेहरा जो न देखूं, तेरा चेहरा जो न देखूं, फिर भला मैं कैसे जीऊं. तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठ से कैसे कहूं खूबसूरत है मसीह तू. कर सके बयां न फरिश्ते तेरी मोहब्बत का, कर सके बयां न फरिश्ते तेरी मोहब्बत का. मैं तो माटी हूँ दो पल की, मैं तो माटी हूँ दो पल की, मैं करूँ तो कैसे करूँ. तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठ से कैसे कहूँ खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू. कितने खुदगर्ज है यहाँ लोग, नजर में प्यार नहीं. कितने खुदगर्ज है यहाँ लोग, नजर में प्यार नहीं. मर ही जाऊं जो मैं तेरी, मर ही जाऊं जो मैं तेरी, एक नजर से दूर रहूं. तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह. थैंक यू.
मैं बबलू को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बबलू और मम्मी जी भी, मैं देख रही थी कि आप भी गा रहे थे। बहुत ही खूबसूरत गाना था और बहुत खूबसूरती से आपने पेश किया। इसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद देती हूँ इस खास गीत के लिए। इस वक्त हमारे बीच एक नन्हा छोटा बालक है जो अपना जन्मदिन मना रहा है। आशीष हमारे बीच जन्मदिन मना रहा है और इस वक्त हम चाहेंगे, अगर रानी से बात हुई थी मेरी, तो रानी कह रही थी कि अगर वो जगा हुआ रहेगा तो वो चाहेगी कि उसके लिए हम गाना गाएं और खास प्रार्थना करें। और आशीष खुद चाहता है कि एक छोटा सा केक काटे। तो इस वक्त हम रानी को कहते हैं कि आशीष को सामने लेकर के आए और हम देखेंगे कि आशीष अभी केक काटेगा और हम उनके लिए, आशीष के लिए यहाँ से गाना गाएंगे। और इसके बाद हम सभा को अंत करेंगे और हम अर्जी करेंगे पौली दादा से वो आशीष के लिए खास प्रार्थना और उसके साथ साथ सभा को अंत करने के लिए प्रार्थना करें। इस वक्त हम आशीष को बुलाना चाहेंगे, वो सामने आए। एट दिस टाइम वी आर सो हैप्पी दैट आवर लिटिल आशीष इज celebrating his 4th birthday. We saw him as a very little boy and he's already 4 years old now, and he wanted to blow a candle and cut the cake. So at this time, short time would like to dedicate towards him so that he could cut the cake, and we would like to sing for him from here. रानी तैयार हो? ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ आ रहा है, आवाज आ रहा है बस। ठीक है, आशीष अभी कैंडल बुझाएगा और केक काट करके अपनी दादी को खिलाएगा। वेरी गुड, हम बहुत खुश है, बहुत फास्ट है आशीष। इस वक्त केक काट के खिलाएगा रानी। केक काटो आशीष के साथ और हम लोग यहाँ से गाना गाएंगे। बहुत सुंदर केक रानी बनाई है। हम जानते हैं रानी के हाथ से हम लोग बहुत केक खाए हैं। हम लोग उतना ये नहीं कर रहे थे, उनका तबियत ठीक नहीं है, तो फिर भी हम बना के रखे। तो दीदी बोली अगर है तो करो। हाँ चलो, आप सबके लिए करें। थैंक यू। और आशीष को खिलाओ पहले। आशीष मम्मी को खिलाओ। दीदी जीजा हमारे घर आए हुए हैं। जीजा दीदी, जीजा एंड बाबू अभी पहुंचे। थैंक यू। ठीक है, इस वक्त हम थैंक यू रानी, थैंक यू बड़ी माँ, रश्मि, रोशन, सबको बहुत धन्यवाद। इस वक्त हम लोग आशीष बाबू के लिए गाना गाएंगे। अच्छा, आशीष और जेसन दोनों जन हो तो रानी इस बार अभी हल्का सा तुम अपना माइक को म्यूट कर दो ताकि आवाज साफ जाएगा। यहाँ से हम लोग आशीष बाबू के लिए गाएंगे। हाँ, थैंक यू। उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ashish. Happy birthday to you. Happy long life to
Happy long life to you. Happy long life, dear Ashish. Happy long life to you. May God bless you, we pray. May God bless you, we pray. May God bless you, dear Ashish. May God bless you always. Birthday greetings to you. Birthday greetings to you. Birthday greetings, dear Ashish. Birthday greetings to you. हैप्पी बर्थडे टू यू फिर से हम सबों की ओर से आशीष, रानी, रश्मि, ईश्वर बहुत बहुत धन्यवाद दे। और तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है रानी, क्या बोल रही थी? थैंक यू वेरी मच, सबको थैंक यू। थैंक यू रानी, थैंक यू वेरी मच, रानी। सबको धन्यवाद। रानी, केक बड़ा है, बांट कर खाओ नहीं तो पेट दर्द होगा। हम पहले प्रार्थना कर लेते हैं, फिर हम लोग एक दूसरे को विश कर सकते हैं, आशीष को भी विश कर सकते हैं और एक दूसरे से हम लोग बातें भी कर सकते हैं। तो इस वक्त डॉक्टर सैमुअल जॉर्ज पॉली दादा से मैं अर्जी करती हूँ कि वो प्रार्थना करें। मैं सोच रहा था व्हाट स्पेशल अबाउट 4 years, 4 साल का सिग्निफिकेंस क्या। एक ही चीज ध्यान में आता है कि कहते हैं कि अगर बच्चों को हम 5 साल के अंदर हम जो कुछ भी सिखाते हैं वो जिंदगी भर उनके साथ रह जाता है। तो रानी तुम्हारे पास 1 साल और है, जितना चीज सिखाना है जो बहुत जरूरी है वो हम लोग को सिखाना है। तो 4 साल हो गया है और बच्चों को हम जो भी सिखाते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं रिसर्च के हिसाब से कि पहले 5 साल में जो भी चीजें हम बच्चों को सिखाते हैं वो उनको जिंदगी भर तक रहता है। बहुत इंटरेस्टिंग है कि इवन E.G. White talks about the importance of nurturing children when they are young. Many of us, we have passed that stage. We can't get back those years, but जो लोग start कर रहे हैं, it's an important principle to keep it in mind. Don't underestimate the age. हमें ऐसा लगता है बड़ा होगा तो सिखाएंगे, लेकिन it's very interesting कि वो पहले 5 साल में जो चीजें हम उनके दिमाग में डालते हैं वो लगभग उनके पूरे जिंदगी भर रह जाता है। So let's take this time to pray. हम प्रार्थना करेंगे आशीष के लिए जब वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्ग पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं आज जो हम फिर से पारिवारिक रूप से इस तरह से इकट्ठे हुए हैं पिता। हमने आपके नाम की भजन गाई है, आपकी प्रशंसा किया हमने पिता, आपके वचन को हमने सुना है और आपके वचन से हम आशीषित हुए हैं। आत्मिक तौर से हमने सीखा है किस तरीके से हमें आपकी इच्छा को जाननी है और उसी इच्छा में अपनी जिंदगी को चलाना है। हम इस वचन के लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहते हैं पिता। और आज खास करके जब हम आशीष के जन्मदिन को याद करते हुए हमने केक काटा और मोमबत्ती बुताई और जब उसके इस खुशी में हम सब लोग शरीक हुए हैं, हम धन्यवाद देते हैं पिता इस जिंदगी के लिए जो हमारे सामने में देखते देखते आशीष इतना बड़ा होता जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं माँ बाप के लिए जो उनकी देखभाल कर रहे हैं और उनकी बढ़ोतरी में उनका काफी हाथ है। हम प्रार्थना करते हैं पिता और उसको आपके हाथ में सौंपते हैं कि आप उसकी जिंदगी में आप ही उसके टीचर हो, आप ही उनको अगुवाई करे पिता अपनी सीख में, क्योंकि वचन हम देखते हैं आपके वचन में कहता है कि fear of the Lord is the beginning of wisdom। जब हम आपके भय मानते हैं तो हम अपने बुद्धि और समझ में बढ़ते जाते हैं। मदद करे पिता कि आशीष उसी मार्ग में आगे बढ़े। और खास प्रार्थना करते हैं रानी और नाथन के लिए जो उसके
उसके बढ़ोतरी में उनके शरीक होते हैं, आप उनको भी अपनी बुद्धि और समझ दें कि आपके मार्ग में, आपके आज्ञा में उनको बढ़ाते जाए पिता। आज जितने हम लोग यहाँ शरीक हुए हैं, हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप जानते हैं हमारे हर एक की जरूरतें क्या है पिता। कुछ लोग अगर निराश है, हताश है, जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें चल रही है जो हमारे नियंत्रण के बाहर है, हम उसको भी आपके सामने लाते हैं पिता। क्योंकि जब हम आपके पास आते हैं और अपने सारे बोझ आपके सामने रख देते हैं, तो आप कहते हैं कि आप हमें आराम देंगे। मदद करे पिता, हमारी जितनी भी मुसीबतें हैं, पहाड़ है, वो हम आपके चरणों में रख दे पिता। और जितने लोगों के को जो बीमार है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी चंगाई का हाथ उसके ऊपर हो, आप पूर्ण रूप से उनको अच्छा करें। और जितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हर एक के पढ़ाई में आपकी आशीष हो। और जो लोग अपने नई जिंदगी शुरू किए हैं, उनको भी आप आशीष दें। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं आज के सभा के लिए जो हमने की है, और प्रार्थना करते हैं आज सबत का दिन और सबत के जितने भी प्रोग्राम जो रखा गया है, उन सब प्रोग्राम के द्वारा हम आत्मिक रूप से आशीषित हो। जहाँ कहीं हमसे गलती हुई है, पाप हुआ, उसको क्षमा मांगते हैं, क्योंकि इस प्रार्थना को हमने यीशु मसीह के नाम से मांगा है। दया करके सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन।